का है भाई? फैसला इस बात का है, दो फैसले हुए बड़े बड़े, एक एक करके चलते हैं। पहला फैसला यह है कि आपने जो तोहफे लिए वो डिक्लेयर नहीं किए, यानी जो तोहफा आपको मिलता है, मैं जब वजारत में था तो हम जाते थे बाहर टूर्स पे, तो हमें भी खैर हमारी तो कोई इतनी हैसियत नहीं थी, मगर हैसियत के मुताबिक कोई ना कोई किसी जगह पे तोहफा दे देता था। सब तोशाखाना में पड़े, सब जमा हुए हुए, एक एक चीज, किसी रुमाल, कोई प्लेट, जो चीज दी गई तोशाखाना में जमा करवा दी गई। वो इस वजह से कि मुझे मेरी जाती हैसियत में तो किसी ने भाई तोहफे देने होते तो इससे पहले मैं जब जाता था तो मुझे तोहफे दे देते ना, कि वो डॉक्टर साहब आप तशरीफ लाए हैं, हमें बड़ी मोहब्बत है आपसे, ये तोहफा तो लेते जाएं। तोहफे तो उस वक्त मिले जब मैं वजारत में आया, और क्योंकि वो आपको जो सौंपी गई है जिम्मेदारी, उसकी वजह से आपको तोहफे मिलते हैं, तो मैंने उसी तरह सरकारी अमानत समझ के उसको सरकार के तोशाखाने में जमा करवा दिए। लेकिन ये क्या बात हुई कि आपने डिक्लेयर ही नहीं किए। चलें, आपको कुछ हक दिया गया खरीदने का, आप खरीद सकते हैं अगर आपके पास हक है, लेकिन आपने तो जमा ही नहीं करवाए तोहफे। और जो जमा करवाए, अब मैं वो बड़ी घड़ी की छोटी छोटी चीजों की तो क्या बात, आपका कीमती वक्त है, जाया नहीं करूंगा। जो जमा करवाया, जिसकी मालियत 3 अरब और 15 करोड़ रुपए थी, 3 अरब और 15 करोड़ रुपए की मालियत के जो हीरे जवाहरात वाले वो जो घड़ी और दीगर चीजें जमा करवाई गई, उनको अपने ही ब्यूरोक्रेट्स के जरिए, एक तरीका कार है, एक कमेटी बनती है, वो बाहर से जाके असेसमेंट करवाती है, अपने ही ब्यूरोक्रेट्स के जरिए 2 करोड़ रुपए का डिक्लेयर करके 90 लाख में खरीद लिया। इससे ज्यादा बेहतर कारोबार क्या होगा? यानी वजीर आजम को, हम तो अक्सर एक दूसरे को मजाक में कहते हैं कि पता नहीं 1.5-2 लाख रुपए तनख्वाह होती है वजीर की, और कोई 1.5-2 लाख 2.5 लाख तनख्वाह होती है वजीर आजम की, तो वो भी करता होगा गुजारा जैसे तैसे करके। लेकिन 5 हो गई, अब वजीर आजम की 5 लाख हो गई है। लेकिन आप ये सोचें कि ये जो कार्रवाई है, 3 करोड़ 15 लाख रुपए की चीज, 3 अरब 15 करोड़ रुपए की चीज आप किसी से तोहफे में लें। 3 अरब, अरब पता है कितना होता है? 100 करोड़ का। 3 अरब 15 करोड़ रुपए की आप जेवरात लेकर उनको डिक्लेयर करें ये 2 करोड़ के हैं, फिर 90 लाख में खरीद लें, फिर 3 अरब या 4 अरब में बेच दें। अरे भाई, इससे ज्यादा बड़ा भला कारोबार क्या होगा? और आधे डिक्लेयर करें, आधे डिक्लेयर भी ना करें और जितने मर्जी में बेच दें। ये है वो मामला जिसके अंदर नॉन डिक्लेरेशन है, जिसके अंदर मिस रिप्रेजेंटेशन है, जिसके अंदर अंडर इनवॉइसिंग है, जिसके अंदर किसी हद तक स्मगलिंग और मनी लॉन्ड्रिंग है कि यहां से प्राइवेट जहाज में बैठे, वहां उतरे, वहां जाके पैसे इकट्ठे किए, यहां ले आए, यहां कहीं वो कहा करते थे कि जनाब चोरी नहीं की थी तो तलाशी दे दो ना, तो फिर दे नहीं थी ना। ये जो 9 वकील बदले, मियां नवाज शरीफ ने किसी केस में 9 वकील बदले, एक केस में गालिबन 9 वकील बदले, एक में 10 वकील बदले। मियां नवाज शरीफ के तो वही 2 वकील थे, वही चलते रहे, उन्हीं ने मुकदमा लड़ाया। रोज पेशी होती थी, रोज जाते थे, रोज आपके सामने आते थे, रोज जाते थे, रोज पेश होते थे, रोज शाम को आते थे, फिर अगले दिन जाते थे। तो यहां पे 1.5 1 साल, 6 महीने, 8 महीने, 9 वकील, 10 वकील बदले जा रहे। तो ये क्या हो रहा है भाई? ये कौन सी अदालती निज़ाम है? कभी वो कहते हैं कल आ जाइएगा, फिर अदालत कहती चले आ जाइएगा, फिर वो कहते हैं चले वकील को ही भेज दें। ये वो जिस ज़माने में बनी गाला में थे, मैं उस ज़माने की बात कर रहा हूँ, आपको याद होगा। यहाँ पे वो कहते थे अच्छा चलें आप खुद नहीं आ सके, आखिरी मोहलत, चलें एक और, चलें शाम तक आ जाएं। अरे नहीं आए, चले वकील ही भेज दें। भाई साहब ने वकील भी नहीं भेजे, फिर 9 वकील बदल दिए। अब इसका आप मुआजना करें, ये एक मैं आपको केस एक सिर्फ तोहफे के मुतालिक बता रहा हूं। 3 अरब 15 करोड़ का तोहफा, 2 करोड़ का डिक्लेयर करके 90 लाख का खरीदा, 3-4 अरब का जितने का भी बेच डाला। प्राइवेट जहाजों में जवाहरात बाहर गए बगैर डिक्लेरेशन के, उन्हीं जहाजों में पैसे आए। वो कैश कहां आया, वो कैश कहां जमा हुआ,
उसकी क्या ट्रेल है, ये तमाम मामलात आपके सारे। अब इसका मुआजना कीजिए कि सज़ा दी जा रही है इस बात पे कि आप अपने बेटे की कंपनी में डायरेक्टर थे। हर बाप को मान होता है अपने बेटे का। आपके भी अगर बच्चे अल्लाह कामयाब करें, और बहुत से के बच्चों को अल्लाह ने बहुत तरक्की दी है, वो जब कामयाब हों और आपको बोलें कि आप मेरी कंपनी में आके बैठ जाएं, तो आप उनसे तनख्वाह लेंगे भाई। और एक शख्स को सारी जिंदगी के लिए नाअहल कर दिया जाए, वजीर आजम को, 3 टाइम्स प्राइम मिनिस्टर को, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को, इस बात पे कि आपके बेटे की कंपनी है, आप एजाजी तौर पे उसके बोर्ड के चेयरमैन बने, आप तनख्वाह ले सकते थे लेकिन आपने नहीं ली। तनख्वाह ले सकते थे, आपने नहीं ली, इसलिए सारी जिंदगी के लिए आप खत्म, सियासत खत्म। And met with Prime Minister Anwarul Haq Kakar and the Chief of Army Staff. This was an important visit where the two sides reaffirmed their long-term commitment to bilateral relations. The two sides underlined the imperative for collective and collaborative approaches to confront terrorism, which is a common challenge to both Pakistan and Iran. We agreed to further strengthen institutional mechanisms on security cooperation and to immediately appoint liaison officers in Turbat and Zahidan. It was also agreed to expand initiatives for economic and development cooperation, including through early operationalizations of the joint border markets. Another significant understanding was the establishment of a joint coordination mechanism at the level of foreign ministers to oversee and steer progress on common agenda for prosperity and development. Last week, Foreign Secretary Muhammad Cyrus Sajjad Qazi shared credible evidence linking Indian agents to extraterritorial and extrajudicial killings of 2 Pakistani nationals on foreign soil. Sponsored terrorist acts inside Pakistan with striking similarities with the pattern observed in other countries, including Canada and the United States. India's assassination of Pakistani nationals on Pakistani soil is a clear violation of Pakistan's sovereignty and a breach of the UN Charter. It is critical to bring to justice the perpetrators, facilitators, financiers, and sponsors of these extrajudicial and extraterritorial killings. The Indian network of extrajudicial and extraterritorial killings is now a global phenomenon that needs coordinated international response. And India must be held accountable for its blatant violation of international law. As part of its proactive diplomacy and deepening engagement with small island developing countries, Pakistan has formally established diplomatic relations with Saint Kitts and Nevis in the Caribbean and the Marshall Islands in the Pacific. Pakistan will continue to widen its diplomatic footprint and expand cooperation with countries across the globe. We intend to enhance outreach to small island developing states, which remain important partners for Pakistan at the multilateral level. Over the last 3 years, Pakistan has established diplomatic relations with Palau, Kiribati, and the Dominican Republic as well. Pakistan is deeply concerned about the ongoing oppression of the people of Gaza by the Israeli occupation forces. We strongly condemn Israel's attack inside the Ibn Sina hospital in Jenin. This event is the latest in a series of inhumane war on hospitals, which fall in the category of war crimes being perpetrated against the people of Palestine. These ongoing atrocities go against the spirit of the provisional measures decided by the International Court of Justice to protect the people of Gaza. The suspension of funding for the United Nations Relief and Works Agency for Palestine refugees in the Near East, UNRWA, amid the ongoing war and suffering in Gaza also goes against the spirit of the ICJ provisional measures that call for provision of essential services and humanitarian assistance to address the challenging conditions faced by the Palestinians in Gaza. We urge reconsideration of the decision to suspend funding of UNRWA, which has a crucial role in protecting and supporting the Palestinian people.
Pakistan also calls for the full implementation of ICJ's provisional judgment to uphold human rights, dignity, and identity of the Palestinian people as per the UN Charter, relevant resolutions, and international law. The implementation of these provisional measures requires an immediate and unconditional ceasefire to bring about an end to the suffering faced by the people of Gaza. The UN Security Council should therefore play its mandated role to impose a ceasefire and protect the people of Gaza from ongoing atrocities. On Monday, next week, the government and people of Pakistan will observe the Kashmir Solidarity Day. On this day, Pakistanis and Kashmiris around the world reaffirm their solidarity with the Kashmiri people in their just struggle for realization of their inalienable right to self-determination. In line with the past practice, an elaborate program has been outlined to observe the Kashmir Solidarity Day with traditional zeal and fervor. Pakistan will continue to extend political, diplomatic, and moral support to our Kashmiri brothers and sisters for the just and peaceful settlement of the Jammu and Kashmir dispute in accordance with the UN Security Council resolutions. I thank you. तर्जमान दफ्तर खारजा मुमताज़ ज़हरा बलोच हफ्तावार ब्रीफिंग उनकी जानिब से दी जा रही थी। कहा गया कि ईरान के वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तान में अहम मुलाकातें की। पाकिस्तान और ईरान के दरमियान राबता अफसरान तैनात करने पर इत्तफाक हुआ। तो छोड़ें आप इस बात को, हम तो जानते हैं और मानते हैं कि आपकी अहलिया जो है वो मोहतरम है, मगर औरत का तकद्दुस वो तो सोचें, वो भी तो एक फर्द है, किसी की मां भी है, किसी की बेटी भी है, किसी की बीवी भी है, मगर एक फर्द भी है। लेकिन आपने किसी का एहतराम नहीं किया, सिर्फ आपकी ज़ौजा का एहतराम मुकर्रर है, ना किसी की बेटी का एहतराम मुकर्रर है। बिकॉज रात को उसके बाप के सामने आपने यहां सर्विसेज अस्पताल के बाहर घसीटा, बाप के सामने कमरे में ले जाके घसीटा ताकि उसको कर्ब हो, उसको दुख हो। जब मियां नवाज शरीफ की ज़ौजा, आपकी ज़ौजा, अल्लाह उनको लंबी जिंदगी दे, और अगर उनके साथ इंसाफ हो, जो भी इंसाफ बनता है, लेकिन जब मियां नवाज शरीफ की ज़ौजा हस्पताल में तड़प रही थी तो आप लोग कहते थे कि ये डाम कर रही है, ड्रामा कर रही है, मजाक कर रही है, ये तो हस्पताल ही नहीं। जब तक वो इंतकाल नहीं कर गई, अल्लाह मग़फ़रत फरमाए, बीबी कुलसूम साहिबा, आप लोग टीवी पे आपके लोग आके ये कहते रहे कि ये ड्रामा है, ये तो हस्पताल ही नहीं है। आपको कुछ फर्क नहीं पड़ा। बिल्कुल किसी की माँ, किसी की बेटी, किसी की बीवी की इज्जत आप पे नहीं है फर्ज, सिर्फ हम पर है। और आखिरी बात मैं आपको ये कहूँगा कि कल रात जब बेगम साहिबा को, हमारी जो इमरान खान साहब की ज़ौजा हैं, उनको जब ले जाया गया, वो जेल में उनको लेकर जाना था, तो बनी गाला डिक्लेयर कर दिया गया सब जेल, और उनको वहाँ भेज दिया गया कि घर की आसाइश में आराम से रहें। तो वो जो माएँ रोटी चोरी करने में पकड़ी जाती हैं बच्चे की भूख की वजह से और जेल में हैं, उन्हें भी घर भेज दें। यार कोई एक स्टैंडर्ड तो रखें। कोई 10, 15, 20 लाख ख़वातीन जो छोटी छोटी भूख से तंग आकर अगर किसी जगह पे गलत या सही किसी मुकदमे में बंद हैं और अदालत जेलों के अंदर सड़ रही हैं 5-5, 8-8 साल से, उन्हें भी तो घर भेज दें। ये हम नहीं कहते कि आप बेगम साहिबा को ना बनी गाला या उससे भी ज्यादा आलीशान 300 नहीं 1000 केनाल के घर में रखें, उसको जेल डिक्लेयर कर दें। बल्कि ऐसा कीजिए कि जहां जहां वो जाएं उसे डिक्लेयर करते जाएं जेल, उस रास्ते को भी, उस मार्केट को भी, ताकि वो आराम से तसल्ली से अपनी जिंदगी गुजार सकें। मगर वो गरीब औरत, और ये मैं वही बातें कर रहा हूं जो वो कहते थे कि वो तमाम गरीब औरतें जो इस वक्त जेल में हैं, सड़ रही हैं, जिनके बच्चे बाहर बिलक रहे हैं, जो रोटी चोरी करने पे या आटा चोरी करने पे जेल में हैं, भाई उन्हें भी छोड़ देना। कि ये आपने सिर्फ एक ही शख्स के लिए तमाम इज्जत जो है मुकर्रर की है, नहीं, वो उन्हें नहीं छोड़ेंगे। मरियम को भी नहीं छोड़ेंगे, बेगम कुलसूम को भी नहीं छोड़ेंगे। अगर अडियाला से छोड़ेंगे तो कोट लखपत में पकड़ लेंगे। ये मरियम के साथ किया था।
लेकिन बेगम साहिबा के लिए बनी गाला जो है वो एहतरामन जेल मुकर्रर की गई। मुझे कोई एतराज़ नहीं, एतराज़ सिर्फ इस बात पे कि वो तमाम औरतें जो आज जेल में उन्हें छोड़ दीजिए, उसी एहतराम में। वही जो आपने प्रिविलेज उन्हें दिया, वही है गरीब आदमी को। ये नया पाकिस्तान, पुराना पाकिस्तान, भाई एक पाकिस्तान हमारे लिए मोहतरम है। मैं कितनी मरतबा आपको ये कहा है कि हमारे लिए मोहतरम है, मगर वो भी तो मोहतरम है, या एक ही मोहतरम है? तो ये तमाम मामलात मैं आपके सामने रखना चाहता था। खान साहब के पास अपीलें हैं, खान साहब अपील में जाएं। खान साहब को हक होना चाहिए कि अपना वो जो उनके ऊपर इल्ज़ाम लगा है उसका दिफा करें, मगर ऐसे ना करें कि एक वकील गया, 2 गए, 3 गए, 4 गए, 5 गए, 9 गए, 10 गए। भाई वकील खड़ा करें और अपना